अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस वीडियो में हमने सेकंड मेथड ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस या न्यूमेरिकल मेथड्स की एग्जांपल करी थी। अब आज हम उसी सेकंड मेथड की सेकंड एग्जांपल करेंगे और हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज की एग्जांपल थोड़ी डिफरेंट है, उसमें हमारे पास इनिशियल गेसेस नहीं होंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड रियल रूट ऑफ इक्वेशन हमें गिवन है एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल 0। ओके, अच्छा, इसमें हमें बता दिया इन्होंने करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ओके, सो अब हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वही एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में लेकर आएंगे हम इसको। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल 0। इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। अच्छा, हाँ, मुझे ये बताना था कि करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस का क्या मतलब है। तो वो इसमें होता ये है कि हम डिफरेंट आइट्रेशंस करते हैं, तो आइट्रेशन के साथ साथ जो हमारे पास उसकी वैल्यूज़ आ रही होती हैं वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक सेम अगर हो जाएं, जैसे फॉर एग्जांपल हमें 5 आइट्रेशन करनी है और हमें लास्ट, सेकंड लास्ट और लास्ट यानी फोर्थ और फिफ्थ आइट्रेशन पे जो हमें आंसर मिले उसकी जो वैल्यूज़ हो वो मैच करें 3 डेसिमल प्लेसेस तक, तो हम ये कहेंगे कि अचीव हो गया हमारा जो 3 डेसिमल प्लेसेस का जो टारगेट था वो अचीव हो गया। वहाँ पे फिर हम अपनी आइट्रेशन स्टॉप कर देंगे। ओके, अच्छा, दूसरी बात ये कि इसमें हमारे पास इनिशियल गैसेस नहीं है। हम इनिशियल गैसेस इसमें हम जो मेथड यूज़ करेंगे वो हिट एंड ट्राई मेथड यूज़ करेंगे, जिसमें हम ये करते हैं कि दो वैल्यूज़ लेके इसको हम एफ ऑफ एक्स में पुट करेंगे और एक वैल्यू हमारे पास नेगेटिव और एक वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। तो अब हम ट्राई करते हैं इसको। फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट वैल्यू अपनी ले लेते हैं x0। ओके, वही हिट एंड ट्राई मेथड कर रहे हैं हम। हिट एंड ट्राई मेथड फॉर इनिशियल गेसेस। लेट्स से x इक्वल 0, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, जो हमारा एफ ऑफ एक्स है। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 0 इक्वल्स 0 क्यूब प्लस 0 माइनस 1 इक्वल 0। तो इसका जो आंसर हमारे पास आएगा दैट विल बी -1, और ये वैल्यू आई है हमारे पास नेगेटिव। ठीक है, नाउ दूसरा हम एक इनिशियल गेस लेते हैं, जो हम ले रहे हैं x इक्वल 1। इसको भी हम पुट इन इक्वेशन 1 करते हैं, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 1 इक्वल्स 1 क्यूब प्लस 1 माइनस 1 इक्वल 0। इसका आंसर हमारे पास आएगा 1 और ये है पॉजिटिव। तो एक तरह से एक पॉजिटिव आ गई और एक नेगेटिव आ गई, तो ये हिट एंड ट्राई मेथड है। यहाँ तक हम यानी अचीव हो गया हमें इस। अच्छा, बट हम एक और वैल्यू ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल x इक्वल्स 1.5।
इसको हम वही पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, तो ये हो जाएगा f ऑफ 1.5 इक्वल्स 1.5 क्यूब प्लस 1 minus 1 equals 0. So it will be, our answer will be, after putting in a calculator, it will be 3.875, and this is also a positive value. So हम अभी ये करते हैं कि जो ये हिट एंड ट्राई मेथड में मैंने आपको बताया था कि एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो वो हमें शुरू में ही मिल गई, तो हम इसी को कंसीडर करके अपना सॉल्यूशन फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं choosing x not equal 0 and x1 equal 1। सो हमारे पास जो f ऑफ x नॉट हो गया, उसकी वैल्यू हमारे पास -1 आई थी, और f ऑफ x1 की वैल्यू हमारे पास 1 आई थी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगेन we will move to the formula. Let's recall the formula but in a different way. So your formula for second method is x n plus 1. In the previous example I used I, so you can use any. So xn plus 1 equals xn minus 1 into f of xn minus xn into f of xn minus 1. If you focus on the formula, if you compare both the formulas in this example and in the previous example number 1, here I have taken the common in terms of f of x I or f of x n. Okay, this is divided by f of x n minus f of x n minus 1. So here's the formula. Now comes the iteration parts. We will start the iteration. Okay, so it's iteration 1. In the iteration 1, we will take n equals 1. Okay, now we will put the value of n in the above formula. So it will be x 1 plus 1 equal x 1 minus 1 into f of x1 minus x1 into f of x1 minus 1 divided by f of x1 minus f of x1 minus 1. So we will get x2 equal x2 into f of x1 also not, sorry, that's why I stuck 1 minus 1 is 0, so it will be x naught into f of x1 minus x1 into f of x naught.
sorry for the stuck, f of x1 minus f of x naught. So here is the equation that we have got. Now we will put the said values. For example, x1, so x2 equals, we have the x0 as well, we have the x1 values as well. Here are they. x0 is 0 and x1 is 1. So we will just put the values. x0 is 0, 0 into f of x1. f of x1 is 1 minus x1 is 1 into f of x0 is minus 1 divided by f of x1 is 1 minus f of x0 is minus 1. So x2, after putting in the calculator, we get 0.5. Okay, so we got the 0.5. Now put this 0.5 in equation 1. So it will be f of x2 equals, we know the equation 1, that was x cube, right? So it will be 0.5 cube plus x, that is 0.5 minus 1. So f of x2 we get is minus 0.375. So after that our first iteration is done. Now we will move to the second iteration. In the second iteration we will take n equals 2. So simply in the second iteration we know that this x n plus 1 will become x2 plus 1. So x2 plus 1 is x3, and I'm making it more simpler, so it will be x2 minus 1 will be x1 into f of x2 minus x2 into f of x2 minus 1 will be f of x1 divided by f of x2 minus f of x2 minus 1 is f of x1. So simply we will put the values here. So x3 equals x1. X1 is 1 into f of x2. f of x2 here, this is the f of x2, that is minus 0.375. Minus 0.375 minus x2. x2 is 0.5. f of x1 is 1 divided by f of x2, that is minus 0.375 minus f of x1 is 1. So x3 we get is
after putting in a calculator is 0.63636. Okay, now if we put this f of x3 in the equation 1, okay, we will put this in, so it will be 0.63636 cube plus 0.63636 minus 1. So we will get f of x3 minus 0.10594 f of x3. Now we will move towards the third iteration. Okay, now I am giving you the chance to solve the third iteration. Here simply you will take n3 and you can solve iteration 3 on your own. I'm writing the values here. For the third iteration, the value of x, simply for the third iteration we will take n3 and xn plus 1 means x3 plus 1 will be x4. So the value of x4 after calculating will be 0.69005, and for the f of x4, this answer we will put this in equation 1, so we will get f of x4 and that value is 0.1864. For this is the third iteration. You can solve this on your own. And now fourth iteration, still you can first I want to recall that second iteration answer x3, if you see the x3 is 0.3636, okay, and in the third iteration x4 is 0.690. so three decimal places are not matching. So ये हमें ख्याल रखना है कि आइट्रेशन करते वक्त हम ये भी गौर करें कि कहीं पे हमारे डेसिमल प्लेसेस मैच तो नहीं कर रहे हैं. अगर मैच कर जाएंगे तो हम वहाँ रुक जाएंगे, वी विल स्टॉप. ओके, सो फोर्थ आइट्रेशन में हम n इक्वल्स 4 लेंगे तो जाहिर सी बात है x5 हो जाएगा. तो x5 की जो वैल्यू आएगी फोर्थ आइट्रेशन में वो आएगी 0.68202 और f ऑफ x5 वही सिंपली यानी इस x5 को हम इक्वेशन 1 में डालेंगे अगर, तो वो आएगी हमारे पास माइनस 0.00074. अभी भी अगर हम देखें तो थर्ड और फोर्थ आइट्रेशन में 690 है, यहाँ पे 0.682 है, तो अभी भी मैच नहीं हुआ है. सिर्फ एक डेसिमल प्लेस मैच हुआ है, that is 6, only 6. Now we will move to the fifth iteration. Here n equals 5, तो x 6 हो जाएगा और आफ्टर कैलकुलेटिंग फिफ्थ आइट्रेशन में हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 0.68233. ओके, अच्छा, अब हम देखेंगे कि क्या वो फोर्थ से मैच हो गई है. तो लेट्स सी, दिस इज 1 डेसिमल प्लेस 2 3 682 682, यस मैच हो गया.
यहाँ पे हम अपनी आइट्रेशन स्टॉप कर देंगे और रिमार्क्स में हम यहाँ पे लिख देंगे कि 3 decimal places achieved, hence approx root of equation 1 वही जो फंक्शन की मिलता है f of x is this x6 0.682। यहाँ पे हमारा ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक जो आइट्रेशन चेक करनी थी वो हमें अचीव हो गई, 3 डेसिमल प्लेसेस मैच हो गए और यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। तो ये सेकंड मेथड जो है, मैंने आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कोई इश्यूज हो तो यू कैन डिस्कस इन द कमेंट्स। और ये जो है न्यूमेरिकल मेथड्स और न्यूमेरिकल एनालिसिस बेसिकली इंजीनियरिंग कोर्सेज में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ये कोर्सेज पढ़ते हैं। ओके, thanks for this. Hope you will understand these solutions. Thank you.